अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आप सबसे जो है वो रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और अब जो है हमने सेशन का सिलसिला जो है दोबारा से शुरू कर दिया है, क्योंकि रमज़ान की वजह से जो है सबका टाइम जो है वो थोड़ा डिफरेंट था। इस वजह से सेशन हमें रोकना पड़ा, तो आप जो है मैंने सेशन का सिलसिला दोबारा से स्टार्ट किया है, जिसमें आज जो है हमने डॉक्टर वक्कास साहब को जो है वो इनवाइट किया है। वो हमारे आज वाले सेशन की जो है वो शान है। तो आज वो हमें गाइड करेंगे कंप्लीट टेक्सास यूएसए स्कॉलरशिप के ऊपर। और जो है सबसे पहले हम थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि सब स्टूडेंट ज्वाइन कर लें, तो उसके बाद जो है हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि अब जो है ये 1 से डेढ़ मंथ रह गए हैं स्कॉलरशिप्स का और पोजीशंस वगैरह का। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है आप स्कॉलरशिप्स को दें ताकि आपका सितंबर इनटेक हो जाए। और सब स्टूडेंट्स जो है वो उम्मीद है इंशाल्लाह सब जो भी मेहनत कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं दिन रात बैठ के, और वो इंशाल्लाह इसी सितंबर में चले जाएँगे। तो ये 1 मंथ रहता है, तो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि मैं रोज़ न्यू से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको स्कॉलरशिप अपने व्हाट्सएप चैनल में जो है वो शेयर भी कर रहा हूँ, और उनके ऊपर वीडियोज़ भी बना रहा हूँ जो ज़्यादा टफ़ होती हैं, जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। तो उस पर मैं जो है कंप्लीट वीडियो बना देता हूँ, ए टू ज़ी पहले गाइड करके, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस भी करके दिखाता हूँ वीडियो में, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। तो हर वीडियो को देखा करें, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स जो है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ओपन है। बस 2 मिनट जो है हम वेट करते हैं और स्टूडेंट्स का, ताकि वो जॉइन भी करते रहते हैं स्टूडेंट्स, और जो है हम अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे बिकॉज़ टाइम बहुत कम होता है। अच्छा सर, सबसे पहले जो है मैं सर वकास को जो है थोड़ा इनवाइट करूँगा कि वो स्टूडेंट्स को थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, चाइना और टेक्सास यूएसए का जो है एक्सपीरियंस शेयर करें कि कौन-सा ज़्यादा बेटर रहा है और कहाँ पर जो है वो आपको डिफ़िकल्टीज़ वग़ैरह आई हैं, और रहने-सहने का जो एक होता है स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्टी होती है। तो थोड़ा-सा स्टूडेंट्स को ये गाइड कर दें, उसके बाद जो है हम अपना सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। जी सर। Thank you, Mohammed, for inviting me today. And थैंक I'm very happy, like you are helping the peoples, especially like Pakistani peoples and the students who are not familiar, like how to approach like scholarships को किस तरीके से जो है टैकल करना होता है, क्या उनके जो है क्या लाइक लवाजमात हैं, क्या आप जो है एक स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं. So it's the I think the best job you can do in that space being it's you are student by yourself, so it's a good job, I say. So first of all, like uh, I will tell about my background. So I'm Mohammed Waqas. So I'm from Lahore. So I did my master like in different institutes of the Lahore Punjab University, engineering university. So I did my MPhil from engineering university and my bachelor and like master is because at that time is mostly BSc and the MSc. So I did from Punjab University and then the MPhil from the UET Lahore. And right after that, I joined the USTC called University of Science and Technology of China as a PhD scholar over there. So it's on the CASTOS scholarship. So that is very highly paid scholarship, and we can say like Fulbright, like in US people get. So I get the same in the China. Right now they changed the name and called ANSO, ANSO, some different names. So like people can get now that as well.
So beside this, like after completing my PhD during COVID, I have to come back to the Pakistan, and then from there I did completed my PhD and then joined in Texas. So in 2022. So right now I'm here a postdoc researcher and working on the some cancer research by using the polymers. And after like right now 3 years in Texas. So first question, as you asked, like where you find like I say about like if the life and if you want to see like something local like Pakistani culture more relevant, so it's more in the China. And in USA, yeah, here are things are very different, like lifestyles is totally different. But over China we have like almost 500, 600 group of the students, so we live together. And that's how we have our own community, like about 100, more than like 300 Pakistani students, and then some other international students as well. So it's a different like lifestyle in the China I spend, and then here it's like a totally unique lifestyle for me, like especially like you have to buy a car. Without car in Texas is you are useless. There is no local transportation over here. So in China you can when wherever you want to go, you have to take just a bullet train, go in whichever city you want to go. But here you have to more depend on the like the your own resources. You have to have your car, and then for even you have to buy a single thing, a grocery, you have to go out for like Walmart or some big stores, Costco. This kind of the totally different lifestyle over here. But in China, like it's everything on your doorstep. So it's not you have to do a lot of hustle for all these like things for your necessities for all these. But here it's totally like different. So that's what my experience over here. So compared to like China, I enjoy here more because here the labs and the professor is like more friendly. They encourage you more. But in China they are like they behave like you we can say like how to deal the like professor deal with the students is sometimes very harsh, and like it's very struggling phase as well. And because other reason I can say just not only the depend on the professor, like I want to say the system which we are like taking our educations, doing masters and fields, is somehow is stand up on a challenging position to such institutes which are well renowned institutes. Like in China is the one the university which I'm talking about is even the best university in the China, like top five, ranked five. And right now it's even the ranking is much more better than the current Texas University. So that's the other reason, because it's the same. You are like no matter you are getting education or your PhD degree from China and US, it's always depend which group you are and which university you are. So that's the like some good like high expectations for these like universities. And I think like the system where we have never seen the NMRs, how to deal the NMR by ourselves, being a chemist, and like how to deal these big instruments as well. We never see them in Pakistan, and immediately over there we have to deal with them. So it's sometimes it's challenging, I say. That's the only difference I feel. But ultimately you can do it once you are have a passion, like the passion which you are especially like Momer and the people like Junaid Khan and other, who's like creating the motivation to like our new youth and generations. So that motivation you have to keep, and that motivation is just not for to getting the scholarship. It's like to get that degrees and to contribute in the science and to contribute for your country. So if you are motivated by these things, so then it's easy. But that's the challenge you can face always. You think डॉक्टर विकास तो स्टूडेंट्स अब जो है काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो हम अपना सेशन अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं डॉक्टर वकास को दावत दूंगा कि वो अपना जो है वो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हमें कंप्लीट गाइड करें। और स्टूडेंट्स आपके जो भी क्वेश्चंस हों वो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में करते रहें, ताकि एंड पर जिन जिन स्टूडेंट्स के कमेंट्स होंगे हम उन्हीं को जो है स्टूडेंट्स को जब जो है सिर्फ जवाब देंगे, उन्हीं के क्वेश्चंस का जो है वो रिप्लाई करेंगे। जी सर वकास स्टार्ट कर दें। सो जैसा कि मैं अभी मेंशन कर रहा था, सो फॉर सेक ऑफ लाइक एवरी पर्सन कैन अंडरस्टैंड, सो आई विल मिक्स विद द उर्दू एज वेल। सो जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारा लाइफस्टाइल यूएस में और चाइना में क्या डिफरेंस है।
तो जो कैस्ट्रॉ स्कॉलरशिप के बारे में है, वहाँ पे चाइनीज स्कॉलरशिप्स अदर दूसरी भी हैं, उनके बारे में फिर हम कभी सेशन करेंगे। तो आज जो है मैं जो ये स्टूडेंट्स जितने भी हैं हमारे साथ जो ऑनलाइन है, तो उनको मैं ये गाइड करना चाहूँगा कि हमने जो है ना, स्पेशली आई राइट नाउ आई डोंट नो द व्हाट इज द सिचुएशन, बट एट टाइम व्हेन आई एम अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप्स, तो हमने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई है कि पता नहीं यूएस के लिए कितनी hard requirements. Although at that time GRE and all these things are little bit tough, but right now the situation are totally different. So especially after COVID, like there is no GRE requirement. Some universities again apply that GRE requirement, but overall, most of universities, if you go, is not depend on the university. Actually, it's depend on the department as well. So आपका जो relevant जो है, जो डिग्री है, आप जिस सब्जेक्ट में, लाइक जोलॉजी है, लाइक कंप्यूटर साइंस है, इस डिपेंड ऑन डिपार्टमेंट इटसेल्फ, और लाइक इंजीनियरिंग है, so you have to apply directly to the department and ask them what are their requirements. So in US, like things are totally different, what we hear from people and what we are just like assume by ourselves. So उसके लिए ये है कि आप सबसे पहले जो भी आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले तो जो मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो प्री रिक्वेजिट है। एक तो ये कि आपके पास जो है ना लैंग्वेज टेस्ट हो, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तानी है, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, नॉन नेटिव इंग्लिश की वो है कि नेटिव स्पीकर्स नहीं है इंग्लिश के, although हमारा सारा सिस्टम इंग्लिश में है, बट स्टिल वी आर नॉट कंसिडर एज द इंग्लिश नेटिव कंट्री। तो आपको मस्ट है कि आप यूएस में आने के लिए कि आपके पास जो है ना लैंग्वेज जो है वो सर्टिफिकेट हो, आइदर वो टोफल हो, आइदर वो आइट्स हो। इसके बगैर जो है ना आपको कोई इंटरटेन नहीं करेगा, एंड सबसे हार्ड पार्ट जो होगा वो वीजा में होगा आपके लिए। सेकंड जो है, जो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है डायरेक्ट जो है ना डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाके उनसे जो है ना जो भी उनकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमेशा वो सबसे पहले फिल करनी होती है। तो यहाँ पे जो है सबसे मेन जो चीज़ है वो एसओपी है। अगर आप यूएस में पीएचडी के लिए आना चाह रहे हैं, इवन मास्टर के लिए भी आना चाह रहे हैं, तो आपने जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, सेकंड चीज़ जो है वो आपके पास जो है वो होनी चाहिए। और जो थर्ड जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी एक अच्छा जो है आपका जो है वो जीपीए हो, ग्रेड हो, तो वो आपको हेल्पफुल होता है। ये तीन चीजें जो है ये प्री रिक्विजिट हैं। अब आते हैं हम स्कॉलरशिप पे। जो स्कॉलरशिप जो है ना, जो हमने मतलब जो मैंने पहले सोचता था, या जो हमें इधर उधर से जो उस वक्त नॉलेज था हमारा, डिपेंड ऑन द अदर सोर्सेज, सो वो टोटली आई बिलीव के वो रॉन्ग है कि हमें यहाँ यूएस में आने के लिए पहले स्कॉलरशिप चाहिए। यूएस में आने के लिए हमें कोई पहले स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर वसीम हैदर साहब हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, आप उनसे भी कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पे पाकिस्तानी है, मैंने यहाँ पे पाकिस्तानियों का एक ग्रुप जो है वो क्रिएट किया हमने यहाँ पे, जो है कि जो हमारे फॉरेन से पाकिस्तानी लोग यहाँ पे आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, कि बाकी हमने सब लोगों को देखा है जो मतलब इंडियन स्टूडेंट्स हैं, मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, अदर कंट्रीज के, दे हैव देयर ओन एसोसिएशन, बट एट द टाइम व्हेन आई ज्वाइन, ऑल्दो आई डिडंट नीड लाइक दैट एसोसिएशन, बिकॉज मैं यहाँ पे पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर हूँ, ये एज अ जॉब कंसिडर होती है और जॉब ही है, तो आई विल पे हाईली। सो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, और ना मेरा इतना इंटरेक्शन है ग्रेजुएट स्टूडेंट से। बट आई रियलाइज दैट इफ वी डिडंट लाइक take that initiative, so it's hard for the peoples to like to get the jobs in future, and also to get settled within that city. So that's why I take that moment, and like I step up and create a team, and from that team there is a professor as well right now. So he's Dr. Maz. He also make his own channel, so if you want to like need details what I'm talking right now, you can get from this, and he directly interview the peoples from different like even like some Indian people, some Muslims, how they get their scholarship in that institute. So it's very specific. His YouTube channel, especially for this, and you can approach right now is in Texas Tech. Is there is a university, is a like second largest university in the Texas state. So you can approach him as well, and he's like a professor in the computer science department, and he's well expert in the AI. So if you want to know about something about like
how to deal with the scholarships and all these things is another opportunity for like that platform. And you can also ask him like if he have some kind of like opportunities within his research group or lab, although he's trying to establish right now, but still he can like help you guys. So the first of all, like the main thing I want to like the perspective what we think is only like you have to get the scholarship and then you can enter into the US is a totally wrong perspective, which I hear from all these graduate students and even master students or even undergrad students. So like the people I met, like I have like almost 300 or more than 400 student circle in here in just Texas in within just this university, which is like I'm a postdoc like University of Texas at Austin. So what I'm telling is like the people have to approach directly the department and have to show for especially for the Indian people they have to show some funding or like take some kind of loan from their banks and show like we can support ourselves, but they have to just show it. They have to pay maybe like $5,000 or something initially as a deposit just to like to start their session. But right as they get admission over here, they have to contact the different professors because in every class here like professors have 400 plus students or 300, that's the minimum. So for every class, they have to like have to hire the TA, which is teacher assistants, and that's how like everyone gets scholarship. Even right now in our lab, 10 like local students, like which you can say like from different states, they are also on the same positions TA. They are not have any kind of scholarship, and how their like is uh, like a semester fee and their monthly like the expenses are covered by TA. So what they give like university give a chance like the students who want to assist teacher in assignments and in labs, so they can get that scholarship once they are here. So you have to just like apply for the different ask different professors even in other department as well. Right now my like the lab from our labs like that students are working with the like some engineering courses as well, or even some like there is a business school, so they take that business school one course over there, and they are helping the people in different aspects. Or even within university there are some local jobs as well, especially like there are some regent store, some other kind of bookstore, or some like purchasing there, so they also take help from the students. That's how they will give them like monthly like a stipend which is to spend and also cover their application. So that's how every person in the US which I see is covering their scholarship, their like semester fees and the monthly stipends. And then the in summer, like usually professor not support you summer in some labs, so over there you can do some summer internship, and that summer internship is are highly paid. You get almost like I hear from people, I have no direct experience because I told I'm doing job over here. So like students told me like it's more than enough for the whole year. That 3 months of the summer internship is much more enough for the all these peoples. And that's how you can right after your master, your PhD, even undergrad, the same is like the like industries or the like Amazons or whatever the your relevant job, people who hire you, or industry who IT industry or like direct these like building industries or all these industry, whatever is your background, is most probably hire you for the next 3 years. So here the next thing I want to also like include in my talk, because is when you are coming here in US is give you double opportunities. First, you get a good education from a best like institutes, and other thing is once you complete your like for example 2 year master's degree or 4 year bachelor degree or like 5 year 4 to 5 year PhD degree, right after you have opportunity for 3 year to work for to get a work visa which is totally free like CPT or OPT. So that's a first year you get OPT and then you can get the CPT. So these are the different visas for you which allow you to work over here for 3 years. And that's how you can after like 3 year working you can get even for the green card and all these things right out. So this is the like
the best benefit, like industries are always welcome you to hire right after the industries. And there are every year, like last I also done like last year, because I want to thinking to jump in some industry, so I attend that thing, and the industries are like looking if you are try to find people, like they just want like people are come to uh, their companies to join as a fresh graduates. So that's the situation over here. So and I believe like all the Indian, especially like in US, if you see like there are more Indian students over here. So, and I find them, even I discuss with my friend, which I talk about Dr. Mas, who's in that. So over there, like the Indian students are much more in the Texas, and that's how I like somehow more like excited and more like want to see our peoples, that why we cannot come here. Like when these people are applying, that this is the only way they are doing. I never see a single person here which have direct scholarship from any like in Texas, from any institutes. So they always come here, they apply for the TA, GA, and they cover their all these scholarships from the different jobs on, or the like the summer internships and all these internships which is doing over here. So this is the opportunity which is, I think, most of us are haven't know about it, and like think like only we can do from this background. So I'm just only talking about the STEM. So especially in biology and all these engineering and STEM, like all these which cover in STEM. So that's how like people are funded in the US. So this is, I think, like, and then after like in your first year, there are some other scholarships which are local scholarships is available. So there are totally like a number of scholarships. First of all, I can say like there are people who have some kind of donations, and they have like whole charity, like for the totally dedicated, like they have some kind of oil fields, especially Texas is very famous for their oil refineries. So for example, they have oil field, or they have some kind of like lands which is like now converted into some good industries or something someday. So they have created some special funds, so you can apply in your first year for these fundings. Even you can win some NIH fundings with your PIs. So that's the different, like after your first year, you are, for especially for the PhDs, they are eligible to get that kind of fundings. For master students, I always recommend just come to the US. You have, once you are in US for master, you have to just like maybe first month or first semester is maybe hard for you, like for few $1,000s, which is if you have somehow can manage it. So I don't think so. Even you can like take some. I find like when I'm trying to at that time. So there are some like in Middle East, there are some banks who can give you like some kind of scholarship as well for the US. So you can try all these resources online which is available. And I can share some of them directly with you guys with the Momer, and like later on he can like share on the his channel. So right now I didn't have, I just want to discuss with you guys how you can approach these opportunities. So this is the like the biggest thing which find is I find like is the most important for you guys to go through that channel. So beside the channel which is very conventional, which we think is always like we have to just get only the scholarship, and that's how we can get the some kind of like you can say the cover up our stipend, and we want some lazy efforts, which I save lazy efforts for the scholarship, especially for the US, because like 90% peoples are not on that scholarship. 90% peoples are on TA and GA, and that the like teacher assistant and graduate assistants for lab assistants, all these things. So they are on that. So that's why I say you have to be like more ready for that kind of the things instead of the scholarship which is just 10% in US. And that's how you can see only like you can, I see only the people from the Lounge and the Nest. They came here mostly because they know how the best channels are working over here, and they have their links. And but like your link over here and the other resources which I mentioned, like Dr. Wasim Heather and Dr. These are the resources which is for all other students, not just for specific for these big institutes, like well-known institutes in our Pakistan.
So you have to apply, and that's how if you follow these different for example, I know most of people from the LUMS. So if you see like they every year, especially Dr. Rishad Hussain, if there are some people who's from chemistry background, so they know these professors. So they always like encourage their students, and like they show like how they's applying. So just check their universities and see like what are the opportunities in that universities. So it's the best way to follow these things. So now back to the conventional scholarships. So there are professors in the US who are giving who win some projects, which is very rare and very hard, and they always prefer to deal the students from the university funded thing, which is TA and GAs. But some professor who are in their early career or who are in their middle stage or late stage get some NIH or NSF funding. So these are the National Institute of Health and National Science Foundation. So these are the like two big resources in the US who are give funding, but they give directly these funding to the professor most of time. But once you are here in US, you can also apply a pre-funding from that institute, especially for NIH. I know from that for NSF or other ones I mentioned, but I don't know about mostly for NSF that you can apply for some funding. But for your to support your PhD, you can apply for the NIH funding, but not for the master. It's just for the PhD. So, like there, as I mentioned, there are professors who win that kind of funding, who have enough funding, who can support some students. Not all students, some students, maybe one or maybe two, but they usually want a person who is well trained, and that's how in US is a very like trendy thing. Like people only hire postdocs. Like after PhD, people like to hire postdocs because they are best to contribute in their projects, not the PhD students who are the mostly trainee. Like first 2 3 years they have to train them, and later on they maybe produce something or may not be. So that's their not expectation. Like China, you have to publish the things. Here the things are different. You have to be a good scientist. You have to be a good like a researcher, and you have to know the knowledge what you are doing here. So it's like here approach is totally different, especially the institute where I'm working. So as I mentioned, like there are few these opportunities, but how to find these opportunities is very hard. And especially like we are like how we are trying, we just go online on the website, maybe check one professor website or two professor website. Is totally hard. It's totally random. If you are very lucky enough, so you can find it. But most of time it doesn't work, and you already see if you even try for the US, you always see that kind of stuff. So what is the best way? I ask you guys if you can answer, like especially Momer, if he can tell me, like, do you guys know any person, like what is the biggest platform or largest platform where all professor are available? Do you know, guys? Momer, you are doing like last few years, as you mentioned to me, like 3 4 years. That's the like I think the missing point for us being a researcher, that we miss that thing. So when I just tell a little bit background, it's not like I'm a superhuman and you guys are not. I'm at the same stage. When I did my PhD from China, it's just I will mention that thing, not just my contribution, because how I get like Chinese scholarship is not just my own oven. It's the friend circle which you choose the people around you, is the totally depend on them, like where they thinking are. Or honestly, I want to also mention here, like my career is not started by myself. It's not by my motivation. It's just by the people surrounding me who think like who aim these big things, like if they want to do PhD, they want to become researcher. I have no intentions even. That what I want to mention. If you don't have intention at the stage where you decided that you have to achieve these things, is not even harder for anymore for you once you are very dedicated for these things. So this is the totally my case. I have no aim for the PhD. It's just a good friend circle who have like their dreams, their PhD's dreams. They want to contribute science, and that's how I got to know about all these scholarships. So that's why I will say you have to create that circle
which are like especially like Momar Khan and Junaid Khan and some other peoples who are online platform. You have to be in contact with these kind of guys who are looking with the different eyes all these worlds of the different countries, different universities. That's how they can help you somehow to be there with their eyes. So I will totally say like these three guys in my life. One of the first, my cousin, his name is Mohammed Talha. He have that dream. He want to do that PhD. I want to say like this is the guy, and then their group. Like right now, all three of them is Dr. Zahid Ali and Dr. Fakhr Zaman. They are in China. They are doing their postdocs. So these are the guys who are see their dreams for PhD, but I'm just attached with them and I get even much more better than them. So it's not depend, it's totally depend on your luck, totally depend how you approach the things, how you do the things, it's only depend. I get the best scholarships, they get like mostly CSE, no, not saying because they are thinking for one thing, but like the destiny we bring you is totally different. You have to put just your full effort. Rest of thing is totally depends on your like Allah I say is where He want like best things for you. So I will say like these three guys are the most important guys, the circle of my who actually like introduced me to like these things. So, like, I want to mention what is the like when I did my PhD, I came back from, as I mentioned earlier, like I came Pakistan and did my completed my PhD from online over there. So it's the same challenge. What to do next? Although I get a lot of postdocs or positions in China, like 3 and 4 in my hand. But at that time, right after COVID, the situation in China is very hard. You cannot go. You have to spend like 10 lakhs or maybe more just to get the tickets and to get inside for that quarantine, and then you have to join the university. I say I'm not gonna do it that thing. So what the other options? So I start looking same groups, Junaid Khan, these other scholarship groups, and seeing does there any opportunity for postdoc? Nothing. Then I see like my during my PhD, I like I target few professors in the US. I listed them, throw the emails, no response. How to find the platform where I can get these positions? So later on, I see like some people are sharing their things on these groups, which you are always see. I find that there is a link, there is like a post name where say like previously Twitter or their sign of that Twitter. So why? Why every like every second or third post or maybe fourth post? Maybe this guy doesn't know that thing. But I find that every professor in the US is on that platform, even in the whole Europe and rest of the world, except China, is on that platform. So that's the thing. You if you want a direct scholarship and you don't know like which professor have scholarship, then you have to use that Twitter right now. This turned to the X. You have to follow that relevant professors. You have to go their pages every day. Even I'm right now for my postdoc. I'm going to change another postdoc. I find that position on that Twitter. Even I apply, as I mentioned during my PhD, I choose some specific professors. They say no. Similarly, I do my in postdoc. They say no, we don't have funding. Then where I find the funding peoples? Either I go like do a hustle work, go every page on every university website and find that no, it's not gonna work for me. So what work you have to use the Twitter like people are using because we are researcher. We want to do something change, and our intentions are should be different. And we have to think like a researcher for every moment at every stage. If you want to pursue PhD, and it's totally not wrong. I say I am very agree with Junaid, like for the especially I'm mentioning because he just motivates people by the other luxuries of life. You have to be motivated that luxuries as well. So and that's what I'm enjoying. Even you can see that's why I just mentioned ACS scholarship. Just that one like ACS Spring. Just I like last month I'm there. So because that's to motivate. Like this is my biggest dream when I'm publishing my papers in ACS journals. I want to be at that platform and present my research over there, and it's a big win for me. So that's why I share that paper, that picture with you guys.
Like when he's asked me, send a picture, Mohammed, like for your. So this is the thing that what I achieve over there. I present like in front of the researcher, which I follow during my PhD. Now they are listening what I'm doing here. So you have to make these targets, and you will be the researcher at the moment you thinking about like you are getting a scholarship. So your thinking should be unique, and that unique thinking get you something bigger what normal people cannot get achieve. And normal people means the people who are not like ready to think or not ready to get these kind of efforts. So as I mentioned, like you have to follow the people's relevant with your expertise or research areas or the area you want to pursue. And one more thing I want to clear here: there is no restrictions for you to in US, like the for background. Like if you have like, for example, polymer background, geology background, you want to jump into the engineering, totally fine. People totally welcome you. There is no such a limit that you cannot cross switch in any of, and it's totally, they have no like we can say like restriction for you for to join any kind of like cross disciplines during your PhD and during your master. So it's always, even you have BA, you have the different kind of degrees, Islamic degrees, whatever the degrees you have, you can always choose the degree what you like. So especially like US is very famous for their IT thing. So I will always encourage people to come with in US for some kind of IT courses, because here are you can get a lot of opportunities, especially highly paid opportunities in US. So I'm talking about the Twitter. You have to guys follow these professors, follow their groups, like connect with them. That's how all Indian guys are working over them. They connect with them. They know like where you can find like the good opportunities. And especially like for if there are some postdocs over here, I don't know on your platform, but if the people who are in their PhDs and that at that stage and looking for some postdocs, so I will say like you have to find new people, new professors, and there is only way you can find the new professors on the Twitter. Follow them, follow their groups, comments them, ask them, and then that's how they will share. Even they will share their other professors who is maybe not on that platform. And now that because of some other things like some political reasons, people are little bit shifted to the LinkedIn. So this is some other opportunity, but I still consider it minor. So that's how you can find the some direct scholarship opportunities relevant to you and ask them. But on the other hand, if I want to say like improve in for Pakistanis for the improvement, especially like in their approach, we don't know like how to make a good series. Even I request Momer Khan, if you have chance, like every month you will have to make some these kind of like online platforms where people at least know how to write a CV. And that's the reason why we are not getting the good positions in the US, because honestly none of us, even I just learned over here like how to make a good resume, good CV, and how to present yourself and how to sell your things, because we think that it's just about the research we did. We did BA, and now it's like it's automatically we can do a PhD. It's not like that. You have to sell yourself. You have that skill, that what you learn and what you know and how you can sell. Even I like few peoples are in contact with me, and whenever I say like you have to prepare that CVs, they always come with the lazy efforts. It's not like that. It's gonna work, especially for US. You can get, but ultimately, as I mentioned, I'm the same guy on your shoes at that time when I'm applying. But ultimately, there is a stage you have to be like on that working style, and that you have to make that effort. So why not we have to start right now? Why we are saying like we will do it after when we get something? Why we are approaching like that? Every one in the US who is coming here, he start pre steps. That's why I'm here. Like I told you, if I don't take steps, I'm in China. I can get my scholarship. I already have 3 postdocs offer in China. I can easily can get over go over there, and they are giving much money than over here. But the thing which I learn over here, I never ever can learn from all other countries. So that's why I will request my all. But why I'm saying requesting you guys, because the only reason
I'm not like when I'm seeing like our neighbor is much more like contributing in size over here. So this is something which is for me is, you can say, jealousy or whatever you can want to say. You can count that word, but I want to see my peoples over here, and I know they have a lot of potential, but they don't know how to approach best. They don't know what are the preliminary things and what are the challenging they have to like to tackle later. So they don't want to do just little efforts. If they are ready for these little efforts, which like Momar is already mentioned, like you guys, you have to see my videos, you have to see everything instead of wasting your time on Facebooks and all these things. You are a researcher, guys, and you have much more ability. Honestly, I find that we guys are much more like talented and like have everything, but just we are missing the right directions and right guidance. That what we are provide, but rest of thing is totally depend on you. So I will mention these two things. You have to be like, no matter you cannot publish anything during PhD, it's not a problem, but you can show your skills by other ways. At least you can write a review article, a short review article, and show the people that you know how to filter the knowledge, how to arrange that things. If you show that kind of thing, still people will accept you and understand like you are a researcher. And it's totally fine, like what I forget to mention, like after you decided that you not want to go to pursue that direction, is totally fine after, but you have to, at pre-stage, you have to show your efforts. So never like compromise about two things. You own your CV, getting for US for and getting a language test, and writing a good. Right now chat GPT is there, is helping you. Just use as a helper, help use it and do your best, and then expect from the peoples or from these institutes, they will entertain you best. So I think this is the something I initially I think I cannot speak such a long, but now, although it's just speaking like a blind wall, but I try my best. Any Here questions? thanks here thanks डॉक्टर वकास। मेरे ख्याल में आपने जो है स्टूडेंट्स के सब जो है क्वेश्चंस पहले से ही सॉल्व कर दिए हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि स्टूडेंट्स की सीरीज़ जो है वो मेरे पास आती है रिव्यू के लिए, तो मैं जो है उन्हें स्कॉलरशिप होल्डर्स के पास भेजता हूँ रिव्यू करने के लिए। तो यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है अननेसेसरी चीज़ें सीवी में लिखी हुई होती हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा होता है कि अपना पूरा का पूरा होम का एड्रेस, उन्हें आपके होम के एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरा ये है कि आपने लिखा होता है कि हमारा जो है एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये आपने लिखा होता है स्किल्स में। तो ये कोई स्किल्स नहीं होती, प्रोफेसर इनको देख के हँसते हैं, ये तो नॉलेज है, ये हर किसी के पास होता है। ठीक है, तो सीवी का हमने एक सेशन किया था, साजिद अली जापान में है रिसेंटली, वो उनके साथ हमने सेशन किया था और उन्होंने अपनी सीवी जो है वो दिखाई भी थी वहाँ पर, और आपको एटीएस सीवी बनाना जो है वो सिखाया भी था। और अहमद रज़ाक की वीडियो भी वहाँ पर जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी है कि एटीएस सीवी को कैसे आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, I will तो include like one more thing, like you never have to tell like, your phone numbers over there, just your फ़ोन नंबर professional बिल्कुल, email, just your बिल्कुल, name. That's what they want to know, and directly start with your education, like what they एजुकेशन, want to see, because you are coming here for your PhD and for you, so they want to see what you have, what education you have, because for PhD till PhD they want to see your education. Beside after बिल्कुल, like PhD they want to see what your experience, then you can write after. So and education, I just say like only if you are applying for PhD, just show your bachelor and your master. And बिल्कुल। if you are applying, didn't need to show like whole like your like from school, मैट्रिक, like yeah, एफएससी, primary school to the to the हाँ, higher. So that's बिल्कुल ये लिखे होते हैं स्टूडेंट्स में, अननेसेसरी चीज़ें लिखी होती हैं। सो आप लोग जो है अपनी सीवीज को टेलर करें और सेल करें. स्टिल टेलरिंग इज जस्ट टेलरिंग. सेलिंग इज लाइक how you like I'm just seeing one person, like he what he did, he just contributed in a poster, and even he didn't contributed, he just present that poster and he just contributed a very like just did one experiment. But how he is selling, like I learned that technique and I present that like whole thing present in a poster session on that stage. So that's what people want to see, like he have the skills, he know like how to present the things, he speak that he can speak the science.
So if you show and like extra like activities, what you contribute voluntarily in different like societies during your master or during undergrad. So these kind of thing for US. I'm not saying for other thing. For other China, for I don't recommend even. For US, you have to show like you have some other abilities as well alongside your education. So for US, you have to consider that thing. And one more common questions is I will encourage everyone. You didn't need to say like I have that kind of profile. Does it fit for that university? Everything fit. It's just on you, like how you will approach the things, how you will tailor, how will you have to sell the your thing. Never ask anyone like here. I just see a comment like does I am apply like does I can apply over there. You can totally apply. You have to just read out what they say over there in their like because I mentioned here is everything is depend on department. It's not depend on university just take care as a whole. They will consider only few things, but the department is the real. Even you can get I forget to mention, even like they have different department like universities have some admission fees. Even right now is it is the time in December in November December, they just give that discounts. You didn't need to pay that 100 or $160 for your admission fee to apply over there. So they give discount. You have to follow them online always. You have to make your list. I say on Excel, I find the people who do that kind of stuff and just look of the online requirement. And I like recently like 4 or 5 PhD students or master students joined that university. They are very smart guy. The people who approach it smartly, they surely can get the admission. There is no, they have no like high marks or like a high grades in their master. They how they approach smartly is only depend on that. जी, बिल्कुल डॉक्टर वकास हमने देखा है कि 2.9 वाले पर्सन को जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाती है, 3.9 वाले को नहीं मिलती। तो स्कॉलरशिप बेसिकली मैंने ये आपको रीज़न्स होती हैं। बताया कि यूएस में स्कॉलरशिप जो है 90%, आप बिलीव करें आप लोग, मैं जितने भी पाकिस्तानियों को बताता हूँ उन्हें लगता है यार नो इट्स वेरी हार्ड। किसी के पास स्कॉलरशिप नहीं है। 90% लोग जो हैं यहाँ मेरे लैब में, मैं अब कैसे दिखाऊं कि वो कोई किसी से कैसे बताऊं कि वो कोई भी स्कॉलरशिप पे नहीं, कोई बंदा। बिल्कुल। और जो मेरी वेल्थ यहाँ पर फंडिंग जैसे है आप लोगों को वहाँ पे वेल्थ फंडिंग का सॉरी जिक्र नहीं कर सके, तो वो पोस्ट डॉक के लिए है। आप डायरेक्टली भी पोस्ट डॉक के लिए यहाँ पे वेल्थ फंडिंग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली जो है आपको जो अगर पोस्ट डॉक अगर कोई यहाँ पे है पीएचडी है या पीएचडी क्लास में है, तो उनके लिए मेरा मशवरा है कि आप जो है ना फ्रेश पीआईज को ढूंढें। फ्रेश पीआईज को ढूंढने के लिए ट्विटर इज द बेस्ट राइट नाउ, एक्स। सो उसके अलावा आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है इफ़ यू आर लेजी का। और अगर कोई आपको ऑनलाइन रैंडम मिल जाता है तो ठीक है, दैट्स टोटली फाइन। बट इफ यू वांट a systematic approach, always apply through look for Twitter for the scholarships or funded projects. But they are very highly, like they want some pre-experiences. Like if you have research experience or you have something, then they will entertain you. Other than, it's very hard to get that kind of scholarships. बिल्कुल डॉक्टर वकास और आपने जो ज़िक्र किया है डॉक्टर वसीम हैदर का, जो है मैं हमने 1 डेढ़ साल से उन्हें जानता हूँ और उन्हें फ़ॉलो भी किया हुआ है और उनके सारे वीडियोज़ भी देखता हूँ। माशाल्लाह वो बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं यूएसए स्कॉलरशिप्स के ऊपर। उन्होंने एक-एक चीज़ को जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। अगर स्टूडेंट्स वही जो तो है देखो उनको मैं, फ़ॉलो करें तो काफ़ी सारा सीख सकते हैं। बिल्कुल वो लोगों के देखो वही इंटरव्यूज हैं जो मैंने आपको बातें बताई ना, कोई भी आप सबका सुन लेना। कोई कोई भी आपको फुल स्कॉलरशिप पे कोई रैंडम कोई मिल जाए तो मैं उसका जी, नहीं कह सकता। वो जो हमारी एक यूएस की जो स्कॉलर, एक तो अंडर ग्रेड वाली तो उन्होंने रिसेंटली कल ही बंद की है। क्लोज़ डॉक्टर कर दिए। हाँ, डॉक्टर वसीम साहब ने उनका बताया। अब जो है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है उसके लिए आपको पता ही है कि वो टोटली टफ है। मैं असल में आपको ऑनेस्टली मैंने पहले ही बताया कि मैं जो अपने हमसाए हैं उनसे बहुत ज़्यादा वो हूँ। आप उनके अप्रोच देखें, जब वो यहाँ पे हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते? सिंपल। सिर्फ हमारी अप्रोच में डिफरेंस है और हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इस हार्ड, बिलीव मी इट्स वेरी इजी। और आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ना, आप सारी जिंदगी दुआएं देंगे कि आप मास्टर में इस तरह स्ट्रगल करके आए, आप यहाँ पे जॉब करें, अपनी लाइफ सेटल करें, सब कुछ आपके लिए ओपन ओपन है। सिर्फ इस आपकी वो कमी है कि आप अप्लाई नहीं कर रहे उस उस राउट के थ्रू। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर विकास यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा
कि हमें 4 साल हो गए देखें स्कॉलरशिप में गाइड करते हुए स्टूडेंट्स को। लेकिन आज मुझे डॉक्टर वकास ने बताया कि लिंक्डइन के अलावा जो है आप ट्विटर पर भी जो है स्कॉलरशिप्स जो है वो ढूँढ सकते हैं, प्रोफ़ेसर को फ़ॉलो कर सकते हैं। ये न्यू बात मुझे भी आज पता चली है जो डॉक्टर वकास ने बताया है। भाई ये सबसे बड़ा, मैं आपसे कह रहा हूँ, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको प्रोफेसर्स को फॉलो करो, उनसे कमेंट्स, उनके ग्रुप्स में कमेंट्स, उनकी तस्वीरों को लाइक करो। जो हम सब लोग, अगर मैं आपके साथ कोई भी अपॉर्चुनिटी कहीं भी मैं डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करता रहता था, तो मैं कहाँ से करता हूँ? मैं तो टोटली ट्विटर को यूज करता हूँ। और मैंने ये जस्ट आफ्टर माई पीएचडी लर्न किया है। और उससे पहले भी मैं, हालांकि ट्विटर पे मैं बहुत पुराना हूँ, जो है 2006-7 से मैंने ट्विटर को यूज किया है, लेकिन उस वक्त मेरा, मैं ये किसी और आईटी के काम के लिए यूज करता था। वो मैंने कभी नहीं रियलाइज किया, लेकिन मुझे जब वो उसका वो उसमें पता लगा कि पीएचडी के ड्यूरेशन में, यार वाई, एंड आई फाइंड, दैट्स हाउ आई फाइंड माय पीएचडी। ये जो जिस जगह पे आज मैं पोस्ट डॉक कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने ट्विटर से, कि ये जिस प्रोफेसर के पास ये थी, वो यूएस का टॉप प्रोफेसर है, टॉप 8 प्रोफेसर्स में है, चैड मर्किन। एंड ही इज हैव राइट नाउ लाइक 3 लाख साइटेशंस ऑलमोस्ट। तो उसके ग्रुप से मेरी पीआई ग्रेजुएट हुई थी, और मैंने उस वक्त इसे जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा था। एंड राइट आफ्टर शी मेंशन अ स्पेसिफिक थिंग फॉर लाइक अ बॉटल ब्रश पॉलीमर व्हिच इज माय एक्सपर्टीज। उससे मैंने इसको अप्रोच किया, एंड दैट्स हाउ आई एम हियर। So people didn't know that thing, and that's why scholarship similar in similar way. But this is the only way, and that's how you know like professor are interested in specific directions, because there is a platform, and that's what we don't know. Where is professors say their own thing, inside thing, or their group say their things. So that's the only way. कुछ लोगों ने यहाँ क्वेश्चन पूछे हुए हैं फॉर स्पेशली फॉर एमए या आइट्स। बिल्कुल, आपने जो भी किया हुआ है, बैचलर किया हुआ है, कोई सीजीपीए है, जो, मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि सीजीपीए और वो, मैं सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आपने कब अपना डिसीजन लिया है लास्ट। अभी यस्टरडे में एक सुन रहा था, ऑल्दो ही इज मौलवी, लेकिन वो बता रहा था कि उसके पास 82 साल का स्टूडेंट है। तो ये जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एज में कब डिफाइन करते हो कि आपने क्या करना है। तो ये एक क्वेश्चन है कि सीजीपीए ये है, मैं आइट से आपके पास 6.5 बैंड है, बेस्ट है, अप्लाई फॉर एनी मास्टर डिग्री। ठीक है, उन्होंने आपका वो नहीं देखना, हाँ स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा आपको। ये है कि आपको जो मैंने सेकंड आउट बताया उसके थ्रू, उसके साथ आए, और यहाँ पे आप अपने आप को खुद बड़ा इजीली फंड कर सकते हैं। मैं यहाँ तकरीबन 500 लोगों को जानता हूँ जो खुद अपनी फंडिंग खुद कर रहे हैं, और इवन 100 के करीब, इवन एक कराची से लड़का है बैचलर में, उसने अपनी सारी चीज, वो चीज मैं यहाँ पे ऑनलाइन नहीं बताऊंगा, लेकिन उसने अपना सब कुछ जो है खुद फंडेड किया। एंड हाउ स्मार्टली ही डिड, ही जस्ट केम आफ्टर एफएससी, और कोई फंडिंग नहीं थी उसके पास, जीरो फंडिंग, और उसने सब कुछ खुद किया है। तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते? सब लोग कर सकते हैं, सिर्फ जब आपके पास विल है। और उसकी कोई फंडिंग नहीं है, जीरो फंडिंग। ही गेट अप, इवन ही गेट राइट नाउ ही इज हाईली पेड देन मी। और उसने अभी कौन सी गाड़ी निकलवाई है? टेस्ला। ठीक है, 35,000 डॉलर। तो, और जस्ट आफ्टर, और अभी उसकी एज क्या है? आई थिंक 20 भी नहीं है वो, या 22 होगा, या 21 है। जस्ट इस एज में उसने टेस्ला निकलवा ली खुद, और राइट आफ्टर एफएससी आया यहाँ पे। तो आप लोग भी कर सकते हैं। जस्ट डिपेंड क्या आप लोगों, ये तो जो ये सीजीपीए जो भी चीजें आप दिखा रहे हैं, सब कुछ एप्लीकेबल है, जस्ट हाउ यू अप्रोच। और अभी जो जो एक भाई ने ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था फॉर इस्लामिक स्टडीज, आई विल से लाइक पीपल, ऑफ कोर्स हियर देयर आर नो सच काइंड ऑफ इस्लामिक स्कॉलरशिप, so you have to come for other some other courses. You have to decide whatever like that thing is interest you, especially some master in some kind of IT or some other specific domains, so it will help. ओके डियर पॉलिटिकल प्रोफेसर। साइंस के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे वो है क्वेश्चन, में कुछ रीड कर लेता हूँ। पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे है पॉलिटिकल साइंस, लेकिन फंडिंग का थोड़ा सा इशू होता है, वो प्रोफेसर को आप कांटेक्ट करेंगे। और यहाँ पे यूएस, अच्छा, सेकंड चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट थी, टैक्सेस को हम टोटली इग्नोर करते हैं, टैक्सेस में सबसे ज्यादा फंडिंग। ठीक है, लेकिन वो फंडिंग्स के लिए आपको प्रोफेसर्स को थोड़ा फॉलो अप करना पड़ता है। और जो ऑनेस्टली जिन सीवीज के साथ हम फॉलो अप करते हैं, उनसे कभी भी कोई प्रोफेसर इंस्पायर नहीं हो पाएगा। आई डोंट नो आप लोगों को किस तरह की सीवीज का पहले इलम है,
लेकिन जिस तरह की सीवीज मैं देखता हूँ ना इंडियंस की, ऑनेस्टली वो सीवी हम अभी उसमें ना हमारे फुल प्रोफेशनल्स भी ना उस लेवल की सीवी नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर उस तरह की सीवीज के साथ अप्रोच करेंगे, और यू हैव टू राइट एन ईमेल, और उनको दूसरा ईमेल में एक चीज मैं बता दूं, उन्हें ये कह कि हम आप मैंने ये लर्न किया हुआ है और दैट्स हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट विद योर थिंग। जब तक आप उन्हें ये नहीं बताएंगे ना कि मैं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए आ रहा हूँ, वो आपको क्यों एंटरटेन करेगा या क्यों स्कॉलरशिप देगा। चाइना की नहीं बात कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली यूएस, कि यहाँ का जब तक आप माइंड सेट नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, इट्स टोटली हार्ड फॉर यू टू कम हियर एंड टू अप्रोच अ राइट वे। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की बहुत ज़्यादा फंडिंग्स हैं, आप टोटली अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका ये सीजीपीए बहुत हाई है, वो तो उन्हें तो आंखें बंद करके यहाँ के लिए अप्लाई करना चाहिए। और अगर टॉफल वगैरह है, और टॉफल के बगैर यहाँ पे नहीं होगा, मतलब जो है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। प्रीवियसली कुछ डिपार्टमेंट ने किया था, लेकिन अब मेरे ख्याल से मोस्टली टॉफल कर लें या आइट्स भी कर लें स्किल वर्क, लेकिन योर बैंड शुड बी 6.5। और जो है थोड़ा सा वीजाज में आजकल इश्यूज हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा विजिलेंट होकर चलना पड़ेगा यूएस में। तो ये चीज़ें हैं, बाकी तो आई डिडंट फाइंड एनी क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई मोमन क्वेश्चन है तो पूछें, जो कुछ पूछना चाहते हैं ओपन है फ्लोर। अच्छा डॉक्टर विकास, यहाँ पर मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट जो है ट्विटर के थ्रू भी प्रोफेसर को अप्रोच कर रहे हैं और लिंक्डइन के थ्रू भी अप्रोच कर रहे हैं, क्या जो है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके थ्रू भी जो है वो अप्रोच कर सकते हैं वहाँ पर स्टूडेंट को फाइंड आउट करके? देखो, जो गवर्नमेंट जैसा ये जो है ये इनकी टैक्सेस की वो है, अच्छा सॉरी, वो जो असल बात बताने लगा था, यहाँ टैक्सेस में ना बेशुमार इसके सब कैंपसेस, एंड दैट्स हाउ पीपल अप्रोच। वहाँ पे रेगुलेशंस कम है। जैसा टेक्सास, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास है ना, इसके 7 या 8 कैंपसेस है। अब एक सैन एंटोनियो में है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास सैन एंटोनियो, यूटी सैन एंटोनियो बोलते हैं। ठीक है, यूटी उसको बोलते हैं डेलस बोलते हैं, यूटी ह्यूस्टन बोलते हैं, यूटी जो है यहाँ पे और टेक्सास में क्या नाम, लबक बोलते हैं, लबक नहीं है, उसका नाम कुछ और है, मुझे खैर वो जो है 7 इंस्टीट्यूट्स हैं, आप उनमें देखें कि आप उनमें जो है रूल्स भी कम है, वहाँ पे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी कम है, सिर्फ आपका रेलिवेंट वो होना चाहिए। और प्रोफेसर भी वहाँ थोड़े से जो है ना आपके साथ वो करते हैं, जैसे लबक यूनिवर्सिटी का बताया टेक्सास टेक, अब वहाँ पे जो है 35,000 स्टूडेंट्स, और बिलीव करेंगे कितने इंडियन है, 20,000। 15,000 लोकल हैं, बाकी 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। अब आप खुद इमेजिन कर लो, वो लगता ही शहर, ये हमारा शहर, इस यूनिवर्सिटी और वो यूनिवर्सिटी लगती है कि ये इंडियन, वो खुद कहते हैं इंडियन यहाँ पे कि ये आईआईटी लगती है हमें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो उनके आईआईटीज है ना, इस तरीके से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो सिर्फ हमारी अप्रोच का फर्क है कि हम उन चीज़ों को जो वे है, और मैंने आपको वे बता दिया, वे सिर्फ वही है जो मैंने आपको बताया है, जिसके थ्रू जो मैंने देखा है कि वो यहाँ पे है, और हाउ दे सही। सर्वाइव किया। ठीक अच्छा है। डॉक्टर विकास, यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि क्या किसी इंडियन स्टूडेंट की सीवी हमें जो है वो एज ए सैंपल मिल सकती है कि हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें? मैं जो है ना परमिशन से करूँगा, विदाउट परमिशन के लिए नहीं करने जी, वाला। परमिशन ले लीजिएगा, हमें सेंड तो कीजिएगा, हम वो देखें कि फिर वो मैं आपको कैसे सीवी को ऑर्गेनाइज कर वो रहे हैं। मैं कर देता हूँ, अगर मैं हाईलाइट वो करके तो मैं उनको आपको, लेकिन वो आपको समझ ही नहीं आएगी ऑब्वियसली, बिकॉज आपको लगेगा यार ये हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया, क्योंकि उनके अपर वो बना पड़ा है ना, उन्हें पता है कि लोग जो गाइड करने वाले हैं ना कैसे सेल करते हैं, लेकिन फिर स्टिल आई विल शेयर विद यू, एंड यू आई होप यू कैन शेयर योर, like eliminate their details and then can share with the peoples। ओके हो गया। स्पेशली ईमेल जो लिखते हैं ना, ईमेल हमारे पीएचडी भी नहीं लिखते ऑनेस्टली। मैं जब मैं उनकी ईमेल पढ़ता हूँ ना, मैं खुद भी सोचता हूँ यार मैं भी ऐसे लिख सकता था एट दैट टाइम, ऑनेस्टली। तो मैं इसमें कोई वो नहीं है यार, लर्निंग यही है। मैं तो बिलीव करता हूँ कि आप लोग लर्निंग जब तक हर, मैं तो अभी जो मैं अपनी रिज्यूमे में यहाँ पे मैंने बताया इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहा हूँ, जस्ट ओपन कि यार हम सब एक ही उसमें है, इसलिए ये चीज़ें वो शेयर कर रहा हूँ। आई लर्न माई, जो मैंने अपनी जो रिज्यूमे बनाई है फॉर इंडस्ट्री, वो यहाँ के बैचलर स्टूडेंट की बनाई है। उसे देख वो उसका जो है वो मेरा एक जो मेंटोर जो मुझे गाइड कर रहा था, एंड वी डोंट हैव मेंटोर, and that's the our missing point. We have to always some person who's mentor, like you are doing mentoring, but of course you are limited with your resources, you can do only few जी। persons or can upload over there,
but still you cannot able. But here I'm taking one-to-one mentor, and he shared that resume with me, and I see, oh, does I can be able to like write my even at that stage to sell myself. So it's always learning. You have to learn no matter at which stage you are. So, and I बिल्कुल, find after right after I make my resume like that, every like every second industry is now calling me. So it's depend only what is the best approach you can, and always have to improve the things, not like just stick on the like I did it is now the world best thing. Never ever. बिल्कुल, बिल्कुल ये चीज़। अच्छा ये मारिया ज़ुल्फ़िकार क्वेश्चन पूछ रही हैं, काइंडली इनके क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या क्वेश्चन है मुझे तो यहाँ पे अच्छा पूछा। हाँ इनका बेस्ट है। ये तो बिल्कुल वो कर जो आपका है वो मतलब बिल्कुल इजी। हाँ, बिल्कुल, और यहाँ पे अभी बिल्कुल, प्रोफेसर है, उसके पास इतनी फंडिंग है मेरी यूनिवर्सिटी में कि आप इमेजिन कर सकते हो कि उसके पास कितनी फंडिंग है। उसके पास जितने जोलॉजी में जो प्लांट स्ट्रेस के ऊपर काम कर रही, अगर आप लोग इस तरह की उसमें इंटरेस्टेड हैं, उसके 5-6 पेपर्स पढ़े हैं, उन्हें बताएं कि मैंने आपका ये रिसेंट पेपर पढ़ा है, ईमेल में लिखें कि मैंने ये रिसेंट पेपर पढ़ा है, मुझे बहुत इंटरेस्टेड हूँ इसमें, ये मेरा बैकग्राउंड है। इस तरीके से आप इस तरह ईमेल लिखें, उसे पता है कि इंटरेस्टेड है, एक ईमेल में नहीं दो में उसके पास वो प्रोफेसर वाहिद है। वो उसके पास अभी एक पाकिस्तानी स्टूडेंट भी आया है पोस्ट डॉक, उसके पास अपनी तकरीबन 10-15 करोड़ की मशीनें पड़ी हैं, और वो जो है वो उसका डायरेक्ट फंडिंग से उसके पास है फंडिंग, उसके पास अप्लाई करें आप लोग, आप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह सर तो उनका जो है वो कॉन्टैक्ट या लिंक्डइन या कोई जो है हमें शेयर कर दीजिएगा ताकि हम उन्हें जो है वो अप्रोच करें। मैं आपको जो है उसका जो है शेयर कर दूंगा। ओके सर, ओके। नेम मुझे नहीं पता मेरा, क्योंकि जो है वो चाइनीज है मेरे ख्याल से प्रोफेसर। मैं आपको बता दूंगा उससे पूछ के। हाँ, मुझे बता दीजिएगा मैं फिर इनसे शेयर कर दूँगा। जी। ठीक है डॉक्टर वकास बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती टाइम जो है वो हमें दिया बिकॉज़ आज कोई भी इतना नहीं करता कि वो आकर जो है वो अपना कीमती टाइम निकाल कर स्टूडेंट्स को गाइड करे ख़ास तौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो कि बिल्कुल नाशुक्रे होते हैं। अच्छा यहाँ पर सेशन सुन भी लेते हैं फिर जाके उसके ऊपर वर्क अच्छा नहीं ये करेंगे चीज़ ना मैं सीवी के आपकी ऊपर बिल्कुल आपको इस बात में मैं आपने अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया और मैं इसको बिल्कुल कहूँगा। हमने इंडियन से सीखा है, और इसीलिए मैंने ये जो यहाँ पाकिस्तानी ग्रुप में कि इवन वो मुसलमान है, और वो जो है ना इनका क्या नाम है इंस्टीट्यूट, सर सैयद इंस्टीट्यूट, वहाँ से है। इतनी रिस्पेक्ट करते हैं अपने सीनियर्स की कि यहाँ पे जो उनके सीनियर्स हैं वो जूनियर से यूएस में होते हुए यहाँ कोई किसी को एक रुपया नहीं, रुपया $1 देने के लिए तैयार नहीं है। वो यहाँ पे उन्हें फ्री चाय और फ्री, वो जब भी सीनियर जूनियर मिलेंगे हमेशा सीनियर जो है उसको फ्री कॉफी फ्री चाय ऑफर करेगा और वो पिएगा, और वो उसके साथ। तो इस तरीके के रिलेशन है कि वो ऑल, और मैं जो ये बता रहा हूँ ना यहाँ पे इंडियन क्यों सक्सेसफुल, उसके सबसे बिगेस्ट रीजन ये है कि दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल विद द पीपल्स हु हेल्प देम। अगर वो बिल्कुल, रिस्पेक्टफुल ना होते और वो हमारी तरह हम जो है ये इसलिए नहीं बता रहे, ये इसलिए बता रहा हूँ कि वी हैव टू, एज वी आर लर्निंग साइंस, वी आर लर्निंग स्कॉलरशिप, वी हैव टू लर्न दैट राइट रिस्पेक्टफुल बिहेवियर एज वेल। और ये हमारा जो बिहेवियर जो हमारा बिल्कुल, जज्बाती है तो बिहेवियर जो डिफरेंट हमने वो लिए हुए हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, वो हमें लर्न करने चाहिए। और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो पीपल्स हमारे लिए एफर्ट कर रहे हैं। स्पेशली आपने देखो कितना बड़ा मतलब आपको इससे क्या फायदा, कितनी अर्निंग आप इससे कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं। और हमें इससे क्या फायदा, लेकिन आई एम मोर हैप्पी मुझे तो आई कुछ सी यू गाइस ओवर हियर। बिल मेरा यहाँ से कुछ नहीं है, मैंने यहाँ कोई अकेला नहीं कमाने आया, बिल्कुल, और इसलिए मैंने आपको कहा है। और ये मैं एक और चीज भी, आपने ये बात की, एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा, खुद अकेले ना करो। अगर मेरे दोस्त आगे अकेले कर रहे होते ना तो मैं कभी भी पीएचडी ना करता। उन्होंने मुझे हेल्प किया, जिसका खुद का ड्रीम भी बिल नहीं था, दोस्त ने हेल्प किया, तो आप भी अपने दोस्तों को हेल्प करो। और जो पर्सन आपको हेल्प कर रहा है उसको आप कंट्रीब्यूट करके दिखाएं, उसको कभी भी डिस्करेज ना करें कि आप उसे, वो आपसे कह रहा है आप कुछ काम करके दिखाएं, मतलब कोई सीवी को इम्प्रूव करके दिखाएं। आप अपनी चीज़ों को बस जो आपके माइंड में है आप उसमें लर्निंग उसमें नहीं आना चाहते, तो इट्स टोटली डिसअपॉइंटेड। दैट्स व्हाई आई विल समटाइम्स स्लो डाउन, haven't like give to answer to the people because they are not willing to learn the things, they are not willing to do the things which is the best for them, not for me, best for them. And I'm sometimes little bit like in my attitude is sometimes hard because I want to people to come here, and for that thing you have बिल्कुल, to do efforts.
People think without effort, just we can get the scholarship, and that's the thing change. No, डॉक्टर वकास हमें इनसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस हम ये चाहते हैं कि ये लोग बाहर चले जाएँ और अपना जो है फ्यूचर बनाएँ। अच्छा ये बाहर चले भी अच्छा सॉरी जाएँगे, मैं इनका एक स्कॉलरशिप चीज लग भी जाएगा, इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक हमें दोबारा हमारे पैसे का जवाब भी नहीं देते। हाँ, एक चीज और अभी यहाँ पे देखें, एक मेरे साथ है, फैमिली है। तो उसकी वाइफ, वो उसने मतलब हस्बैंड ने इनकरेज किया, उसकी अच्छी रिसर्च वो थी पाकिस्तान में, नर्स से वो ग्रेजुएट मास्टर। तो यहाँ पे उसकी पीएचडी में उसको एडमिशन मिला, और वो मतलब वो थी, और आज दोनों जो है वो बिल्कुल सेट लाइफ है। तो दैट्स हाउ यू कैन ब्रिंग योर फैमिलीज एज वेल, एंड नाउ दे हैव टू किड्स हुँ, हियर, एंड लास्ट मंथ दे गेट देयर ग्रीन कार्ड एज वेल, and I just the one who encouraged them. I will encourage all others for that side, but I'm not gonna talk for more green card over here. But I encourage them, and during their PhD, they get their green card as well. So these are the opportunities which you can never find in other countries of the world during your PhD even. लेकिन ये है कि एफर्ट पर ही एफर्ट, ये नहीं कि मैं आप मुझे बस अपनी स्टोरियां सुनाते रहें जो चीज़ें काम करने वाली हैं, या आपको सुनाते रहें जो काम करने वाले पॉइंट्स उन पर काम ना करें और हम जंप कर जाएं। मैं इन पे बिलीव नहीं करता, और इसीलिए हमारी नंबर जो है ना बहुत कम है यहाँ पे, कि हम जो है एफर्ट के बगैर चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, और बिल्कुल। जो इन्होंने हमें, सॉरी, चलिए जिन्होंने डॉक्टर हमें जस्ट लास्ट पॉइंट, जो हमें इनकरेज कर रहे हैं, जो हमारे फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम उनको जो है ना उनको डिसरिगार्ड करते हैं, और उनको डिसरिगार्ड करके अपनी कामयाबियों के झंडे खुद गाड़ना चाहते हैं। आई डोंट थिंक सो इट्स गोना वर्क। दैट्स व्हाई आई मेंशन माय फ्रेंड्स फर्स्ट, दैट हु कंट्रीब्यूटेड इन माय लाइफ। और पेरेंट्स तो ऑफ कोर्स, बिल्कुल, दीज आर द लाइक जो है चीजें हैं। और कुछ क्वेश्चन हो तो। बिल्कुल डॉक्टर। बिल्कुल डॉक्टर वकास और मैंने अपने स्टूडेंट्स को इतना तक हेल्प किया हुआ है कि बाहर जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो प्रोफेसर के बिहाफ पर सीरीज़ रिव्यू करते हैं और स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। मैं स्पेशली उनसे जो है इनके एसओपीज़ और जो है वो सीरीज़ रिव्यू करके दे रहा होता हूँ। लेकिन ये फिर भी जब रिव्यू करके देता हूँ और वो कमेंट्स देते हैं, ये फिर भी अपनी सीवी को जो है वो नहीं करता ठीक। मैंने फिर बताया ऐसे इंसानों का जो है वो दिल भी नहीं और करता है कि इसलिए हेल्प करें, फिर हम उनको वाक़ई मैंने छोड़ दिया, इसलिए मैंने छोड़ दिया कि मैंने कहा यार आई हैव टू फाइंड अनदर वे। इसलिए आपको भी इतना लेट टाइम दिया ऑनेस्टली, कि मुझे लगा कि मतलब जस्ट जो है ना वेस्ट ऑफ टाइम है एनर्जी लगाने के लिए। बट नाउ वी कैन ऑलवेज होप गुड। That's why I randomly again come up with motivation when I find some people and see like they are not deserved and still they are here. So I say like there may be some people who can much more deserve and better deserve than them and can come here. So I want like most, like every Pakistani want to see over here, and that's how we can contribute. In if we learn good science, good knowledge, that's how the India contributed. They send them good peoples, learning peoples over there, and then they will go back and they build up their country on a scale which we are seeing right now. Then थैंक यू डॉक्टर वकास, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जो है आपने हमें टाइम दिया और स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड किया। काफ़ी कुछ मुझे खुद भी जो है वो सीखने से मिला है आप आपसे जो है वो स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है और न्यू पॉइंट्स जो है वो हमने गेन किए हैं आज आपसे। तो बहुत शुक्रिया आपका दिल से, मेरी तरफ से और सब स्टूडेंट्स की तरफ से। thank you, Mohammed. And I will make pray for you guys, like Allah make it easy for all of you, and like the most important thing along with whatever like your beliefs are, but that's the most important thing in my life. Like I'm with the like without deen and without the like effort of deeds, I'm nothing. So I will encourage you along with your efforts, make praise and make like bring like Allah with you as well. So things will be easy for you. Okay, dear students and Dr. Waqas, Allah Hafiz. Allah Hafiz.